हेलो एवरीवन, होप सो तुम मेरी बात सुन पा रही हो। इस क्लास में मैंने स्टार्ट करने जा रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, क्या मॉडर्न हिस्ट्री? और मॉडर्न हिस्ट्री से हम रिवाइज करेंगे फ्रॉम शॉर्ट नोट से हम रिवाइज करने जा रहे हैं। एंड PYQ भी टॉपिक वाइज भी हम डिस्कस करेंगे। आज की जो इम्पोर्टेंट इस क्लास की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो एक्चुअली कम्युनलिज्म। ओके, कम्युनलिज्म इज़ द इम्पोर्टेंट टॉपिक आज की क्लास में। और पार्ट 8, दिस इज़ द पार्ट 8। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टुडे क्लास। आज की क्लास की मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है कम्युनलिज्म को हम डिटेल्स में डिस्कस भी करेंगे। ओके, सो चलो पहले PYQ को देखने की कोशिश करो। PYQ में क्या होगा देखो, सेपरेटिस्ट मूवमेंट with reference to the Indian freedom struggle. One of the following statement is not correct. Okay, Hakim Azmal Khan was one of the leaders to start a nationalist and militant Ahrar movement. When the Indian National Congress was formed, the Shahid Ahmad Khan opposed it. When the Indian National Congress was formed, Shahid Ahmad Khan is opposed it. When All Indian Movement League, which was formed in 1906, and the vehemently opposed the partition of Bengal and the separatists of electorates. Okay, separatists of the electorates. Maulana Bharkutullah and the Maulana Obisdullah Sindhi were among of those who formed a provisional government of India in Kabul. Done. India in Kabul. तो इसके बारे में बोल रहे हैं यहाँ पर। ओके, डन। अब चलो नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, असर्शन देखो और एक रीजन देखो। असर्शन में बोला अकॉर्डिंग टू द वेवल प्लेन द नंबर ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वेयर टू बी इक्वल्स। ओके, अकॉर्डिंग टू द वेवल प्लान द नंबर ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स मेंबर इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल आर were to be equal. Okay, Wavell thought that this arrangement would have avoided the partition of India. Done. Both A and R true, but R is the correct explanation of the A. Both A and R true, but R not is the correct explanation of the A. Done. So यहाँ पर क्या बोला, the Wavell plan according to Wavell plan the number of Hindus and Muslims members in the executive council are to be equal, and Wavell thought that this arrangement would have avoided the partition of India. Then after the quiet Indian movement, C. Raja Gopalacharya issued a pamphlet entitled The Way Out. Which one of the following was proposed in this pamphlet? इन pamphlet ने क्या follow किया है? Okay, the establishment of a war advisory council composed for representatives of British of India and the Indian states. The establishment of a war advisory council a composed of representatives of British India and the Indian states. The reconstitutions of the Central Executive Council in such a way that all its members except the Governor General and the Commander in Chief should be Indian leaders. So क्या बोल रहे हैं, reconstitutions of Central Executive Council. Reconstitution of the Central Executive Councils composed of representatives of British India and the Indian state. Okay, the reconstitution of Central Executive Council in such a way that all members except the Governor General and the Commander in Chief should be Indian leaders.
fresh election to the central and the provincial legislatures. Fresh election to the central and the provincial legislatures to be held at the end of 1955 and constituent making body to be convened as soon as possible. तो क्या बोल रहे हैं पर fresh election to the central and the provincial legislatures to be held at the end of 1945 and a constitutional making body to be convened as soon as possible. A solution for the constitutional deadlock. A solution for the constitutional deadlock के बारे में यहाँ पर बोल रही हैं. Consider the following statement with respect to the formation of the Pakistan. पाकिस्तान की फॉर्मेशन की रेस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है राइट है. द वर्ड पाकिस्तान वॉज फर्स्ट यूज बाय द रहमत अली. द वर्ड पाकिस्तान इज द फर्स्ट who is the Rahmat Ali. His pamphlet titled Now or Never. Okay. The idea of the separate nations for Muslims. The idea of the separate nations for Muslims was originally put forward by the Muhammad Iqbal. The Pakistan resolution was passed during the presidency of Muhammad Ali Jinnah. During the Muslim League's Lahore session 1940. What is the correct answers? समझ रही हो यहाँ पर क्या हो रहा है. हाँ. Which of the following statement is correct? कौन सी स्टेटमेंट ये करेक्ट है? About the formulas or pacts devised to solve the political deadlock between the Congress and Muslim League. Muslim League and Congress के बीच में जो political deadlock create हुआ था. Okay. जो political deadlock create हुआ था उस deadlock के बारे में बोल रहे थे. In this Desai Liquid Pact. Okay. In this Desai Liquid Pact. Done. In this Desai Liquid Pact. Liquid Ali Khan gave up the demand for a separate Muslim state in exchange of equal representation of Muslims and Hindus in the Council of Ministers. Sri Raja Gopalachary's devised a proposal for the Congress to offer the League at the predominantly Muslim region that become Pakistan based on a plebiscite of allowing the people in those regions where Muslims were in the majority. फिर से देखो क्वेश्चन देखो. With reference to the Indian freedom struggle, one of the following statement is not correct. कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? One of the अजमल खान किसके बारे में बोल रहे हैं? हाकिम अजमल खान was one of the leaders to start a nationalist. Done. And militant Ahrar movement. When the Indian National Congress was formed, जब Indian National Congress formed हुए, the Shahid Ahmad Khan opposed it. शाहिद अहमद खान किया गया अपोस्ट किया. द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग which was formed in 1906 and vehemently opposed the partition of Bengal and the separate electorate. Maulana Barkatullah and the Maulana Obedullah Siddi were among those who formed a provisional government of India in Kabul. Done. Assertion. According to the Wavell plan, the number of the Hindus and Muslims number of Hindus and Muslim members in the Executive Council were to be equal. Okay, were to be equal. Then क्या बोला? Wavell thought that this arrangement would have the avoidable partition of India. Okay. So, after the Quiet Indian movement, Sri Raja Gopalachari issued a pamphlet entitled The Way Out. Which one of the following was proposed? This pamphlet में क्या propose किया गया था? The establishment of a War Advisory Council establishment हुआ था composed of representatives of British India उसके रिप्रेजेंटेटिव्स था एंड इंडियन स्टेट भी उसके रिप्रेजेंटेटिव्स था. क्या था? रिप्रेजेंटेटिव्स था. डन.
Okay, reconstitution of Central Executive Council in a such a way, reconstitution of the Central Executive Council in a such a way that all its members except the Governor Generals and Commanders in Chief, except the Governor General and the Commander in Chiefs, Indian leaders. तो क्या बोल रहे, Commander in Chiefs and fresh election to the central and the provincial legislatures, fresh election to the centers and the provincial legislature to be held at the end of the 1955 and constitution making body to be convened as soon as possible. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या बोल रहे हैं फ्रेश इलेक्शन टू द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इन 1945 and a constitution making body to be convened as soon as possible. Okay, constitution making body to be convened as soon as possible. Done. A solution for the constitutional deadlock. Solution for the constitutional deadlock. Done. Consider the following statement with respect to the formation of the Pakistan. पाकिस्तान की फॉर्मेशन के लिए पाकिस्तान की फॉर्मेशन की बात बोल रहे हैं. The word Pakistan was the first used by the Rahmat Ali in his pamphlet titled Now or Never. तो in his pamphlet title क्या बोला, Now or Never, the word Pakistan. The idea of the separate nations for Muslim was originally put forward by Muhammad Iqbal. The idea of separate nations for Muslims were originally put forward by Muhammad Iqbal. The Pakistan resolution was passed during the presidency of the Muhammad Ali Jinnah during the Muslim League Lahore session in 1940. Okay, in the 1940. Done. अब चलो नेक्स्ट. तो क्या बोला, पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ द मोहम्मद अली जिन्ना की प्रेसिडेंसी से पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ है ड्यूरिंग द मुस्लिम लीग की लाहौर सेशंस इन 1940. हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्टेड? Which of the following statement is correct about the formation or pact devised to solve the political deadlock between the Congress and Muslim League? In the Desai-Likud Pact, the Ali Khan and gave up the demand for a separate Muslim state in exchange of equal representation of Muslims and Hindus of the Council of Ministers. Okay, see, Raja Gopalacharya devised a proposal. Okay, a proposal for the Congress to offer the League the predominantly Muslim region that become Pakistan based on the plebiscite of allowing the people in those regions where Muslim were in the majority. Select the correct answer from the quote. Okay, select the correct answer from the quote of the given below. तो हम लोग देख लिया एक्चुअली क्या का क्वेश्चन यहाँ पर से आया है. डन. अब हम देखेंगे क्या, व्हाट इज द कम्युनलिज्म. कम्युनलिज्म क्या है? पहली बात तो ए, हमको ये देखना चाहिए. एंड ओके, व्हाट इज द कम्युनलिज्म एंड ओरिजिन ऑफ कम्युनलिज्म. कम्युनलिज्म की ओरिजिन की बात यहाँ पर बोल रही हूँ. व्हाट इज द कम्युनलिज्म? द आइडियोलॉजी of grouping around the religion. Okay, the ideology grouping around the religion. What is the communalism? Communalism क्या है? A homogeneous community possessing certain common interest. Okay, possessing certain common interest. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? Ideology of grouping around the religion. Okay, a homogeneous community, that's mean uniform community possessing a certain common interest. Okay, possessing क्या रहा है? Certain common interest. It is a nations that various interests of a community are dissimilar and divergent that of others. क्या बोल रहा है? It is a nations that various interest of a community. community की various interest के जो है of a community were dissimilar or divergent that of the others. Dissimilar and divergent that of the others. समझ रही हो? Okay. Various interests of the community are dissimilar and divergent that of the others. Okay, dissimilarly भी है और divergent भी है, that's of the others. An aspect of the communal ideology. Communal ideology एक aspect क्या था? Backwardness and domination theory. क्या था?
backwardness and the domination theory. An aspect of communal ideology की एक एस्पेक्ट क्या था, बैकवर्डनेस एंड द डोमिनेशन थ्योरी. डोमिनेशन थ्योरी बैकवर्डनेस की एक आइडियोलॉजी था. इट स्टैंड अपोज टू द डेमोक्रेटिक आइडियाज. डेमोक्रेटिक आइडियाज की अपोज कर रहा था. इट अपोज द डेमोक्रेटिक एंड द सोशलिस्ट इक्वलिटी. डेमोक्रेटिक एंड द सोशलिस्ट इक्वलिटी की भी अपोज कर रहा था. इट ऑल्सो अपोज द सीरियस पॉलिटिकल स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल. सीरियस पॉलिटिकल स्ट्रगल्स अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल. सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, व्हाट इज द कम्युनलिज्म. कम्युनलिज्म क्या है? आइडियोलॉजी ऑफ ग्रुपिंग अराउंड द रिलीजन. आइडियोलॉजी ऑफ ग्रुपिंग अराउंड द रिलीजन. रिलीजन के अराउंड में जो ग्रुपिंग हो रहा है, आइडियोलॉजी का जो ग्रुपिंग हो रहा है उसके बारे में बोल रहा है. ए होमोजीनियस कम्युनिटी पोसेसिंग सर्टेन कॉमन इंटरेस्ट. ए होमोजेनियस ओके क्या बोल रहे हैं? ए होमोजेनियस कम्युनिटी पोसेसिंग सर्टेन कॉमन इंटरेस्ट. सर्टेन कॉमन इंटरेस्ट को क्या कर रहे हैं? पोसेस कर रहे हैं. ओके, ए होमोजेनियस, इट इज ए नेशन. It's a nation that various interests of community are dissimilar and divergent that of the others. एक के साथ और एक various types of community dissimilar भी होता है और denomination theory भी. An aspect of the communal ideology. communal ideology के जो aspect है, communal ideology के जो aspect है ना, उस aspect के बारे में यहाँ पर बोल रहे हैं. समझ में आया? एन एस्पेक्ट ऑफ द कम्युनल आइडियोलॉजी बैकवर्डनेस एंड डोमिनेशन थ्योरी की बात बोल रहे हैं. कम्युनल आइडियोलॉजी की एक एस्पेक्ट क्या है? बैकवर्डनेस एंड डोमिनेशन थ्योरी. कम्युनल आइडियोलॉजी के एक एस्पेक्ट क्या है? बैकवर्डनेस एंड डोमिनेशन थ्योरी. इट स्टैंड्स ऑपोज टू द डेमोक्रेटिक आइडियाज. डेमोक्रेटिक आइडियाज की ये ऑपोज कर रहा था. क्या मैं बोल रहा हूँ? डेमोक्रेटिक जो आइडियाज है ना, उस डेमोक्रेटिक आइडियाज की ऑपोजिशन में था. इट अपोज द डेमोक्रेटिक एंड सोशल इक्वलिटी. सोशल इक्वलिटी एंड डेमोक्रेटिक का भी ऑपोजिशन में था. ओके, इट ऑल्सो अपोज द सीरियस पॉलिटिकल स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल. इट ऑल्सो अपोज द सीरियस पॉलिटिकल स्ट्रगल अगेंस्ट द कम्युनल रूल. डन. अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल. कॉलोनियल रूल की अगेंस्ट में सीरियस कम्युनल स्ट्रगल्स की यहाँ पर बात बोल रही हैं. डन. अब चलो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? इट ऑल्सो अपोज द सीरियस पॉलिटिकल स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल्स. डन हो गया. इट इज द आउटकम ऑफ द कॉलोनियल रूल. कॉलोनियल रूल्स की ए आउटकम है. द colonialism produced the socio-economic structures. Okay, the colonialism produced the socio-economic structures. समझ में आया? The colonialism produced the socio-economic structures that become instrumental in giving birth to the communalism. Done. It is an outcome of the colonial rule. Colonial rule की एक outcome है. Then colonialism प्रोड्यूस कर रहा है द सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. हाँ, कॉलोनियलिज्म क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट बिकम इंस्ट्रूमेंटल इन गिविंग बार्थ टू द कम्युनलिज्म. ओके, जो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है इन गिविंग बार्थ टू कम्युनलिज्म. तो कम्युनलिज्म के बार्थ प्रोवाइड कर रहे हैं. इसकी वजह से कम्युनलिज्म की बॉर्न हुआ है. इट इमर्ज्ड एज एन आइडियोलॉजी थ्रू. ओके, एक बाय द आइडियोलॉजी इट इमर्ज्ड हुइज एस्पिरेशन ऑफ द मिडिल क्लास कुड बी आर्टिकुलेटेड. इट इमर्ज्ड एज एन आइडियोलॉजी थ्रू हुइज एस्पिरेशन ऑफ मिडिल क्लास कुड बी आर्टिकुलेटेड. ओके, क्या बोले? इट इमर्ज्ड एज एन आइडियोलॉजी through whose aspiration of middle class could be articulated. It brought out the weakness in program of national leaderships. It led to insecurity and threat to identity. क्या बोल रहे हैं पर? origin of the communalism में क्या बोले? It is the outcome of the colonial rule. colonial rule की ये outcome है. And colonialism produced the socio-economic structure.
कॉलोनलिज्म क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके, दैट बिकम द इंस्ट्रूमेंटल इन गिविंग बार्थ टू द कम्युनलिज्म, दैट बिकम इंस्ट्रूमेंटल इन गिविंग बार्थ टू द कम्युनलिज्म, ओके, done. It emerged as an ideology through which aspiration of the middle classes could be articulated. Okay, it brought out the weakness in programs of the national leaderships. Okay, it brought out the weakness in programs. Brought out the weakness in programs of the national leadership. It led to insecurity and threat to the identity. It led to insecurity and threat टू द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को क्या कर रहा है? इनसिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है एंड थ्रेट दे रहा है टू द आइडेंटिटी, ओके. व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द कम्युनल मूवमेंट? कम्युनल मूवमेंट की क्या बैकग्राउंड था? इन द 19th century जामे मिल डिस्क्राइब द इंडियन हिस्ट्री इनटू थ्री फेज को इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया कि हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री एंड ब्रिटिश हिस्ट्री. Okay, in the 19th century, Jame Mills described the Indian history into three phases. In Indian history को 3 phase में डिवाइड किया. Okay, एक हिंदू हिस्ट्री, एक मुस्लिम हिस्ट्री, एक ब्रिटिश हिस्ट्री. रिवोल्ट ऑफ द 1986 में हिंदू मुस्लिम यूनिटी था. ओके, रिवोल्ट ऑफ द 1985 रिवोल्ट ऑफ द 1857 में हिंदू मुस्लिम के पास बीच में यूनिटी था, लेकिन ब्रिटिश हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द मुस्लिम्स, ओके, लेकिन ब्रिटिश की जो हॉस्टिलिटी है ना वो टुवर्ड्स द मुस्लिम्स था. सोशियो इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ हिंदूज बिकम ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. सोशियो इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ हिंदूज की जो सोशियो इकोनॉमिक एडवांसमेंट है वो इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ हिंदूज because of the socio-religious reform movement. Because of the Western educations, Hindus got government jobs. Because of the Western educations, Hindus got government jobs. Socio-economic advancement of the Hindus because of the socio-religious reform movement. Okay. Hindus because of the socio-religious reform movement की वजह से. Because of the Western educations, Hindus got government jobs. Western education की वजह से Hindus got government jobs. Muslims remain backward because the lack of the Western educations and lack of the reform movement. Okay, Muslims remains backward ही रह गया था मुस्लिम ने, और उसकी वजह से because of the lack of Western education and lack of reform movement, lack of the Western educations and lack of the reform movement, इसकी वजह से. phase of communalism in India, phase 1 and phase 2. phase 1 and phase 2. phase 1 में केवल nationalist phase of communalism, liberal and moderate phase of communalism. phase 1 में क्या था? nationalist phase of communalism जो 1857 से 1910 तक रहे हैं, और देन फेज 2 में लिबरल और मॉडरेट फेज ऑफ कम्युनलिज्म 1910 से लेके 1937 तक. फेज 3 एक्सट्रीमिस्ट फेज 1937 से 1947 में रहा है. डन. एक्सट्रीमिस्ट फेज. ओके, उसके बाद देखो क्या बोला मैंने? फेस ऑफ द कम्युनलिज्म इन इंडिया. इंडिया में कम्युनलिज्म के क्या क्या फेस था? फेस 1 में नेशनलिस्ट फेस, एक नेशनलिस्ट फेस ऑफ द कम्युनलिज्म, 1857 से होगा. ओके, 1857 से 1910 तक जाएगा. डन. 1910 तक जाएगा. और फेज 2 लिबरल और मॉडरेट फेज. लिबरल और मॉडरेट फेज जो है, ओके, लिबरल एंड मॉडरेट फेज जो है कम्युनिज्म को 1910 से 1937 तक जाएगा. डन. ओके, देन आएगा
एक्सट्रीमिस्ट फेस कम्युनलिज्म जो 1937 से 1947 के बीच में जाएगा। फेस 1 नेशनलिस्ट कम्युनलिज्म। फेस 1 देखिए नेशनलिस्ट कम्युनलिज्म, कलकत्ता मूवमेंट एंड अलीगढ़ मूवमेंट, कलकत्ता मूवमेंट एंड अलीगढ़ मूवमेंट, नेशनलिस्ट कम्युनलिज्म। यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, अब्दुल लतीफ़, ओके अब्दुल लतीफ़ के बारे में यहाँ पर बोल रहे हैं। अब्दुल लतीफ़ मोहम्मदीन लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी, Mohammedan Literary and Scientific Society, established in 1863, first Muslim leader who talked about the Western educations among the Muslims. First Muslim leaders who talk about the Western education among the Muslims. Done. National Mohammedan Association was established by the Shahid Amir Ali and the Shahid Amir Hossein by 1887. Okay, National Mohammedan Associations was established by the Shahid Amir Ali and the Shahid Amir Hossein. फोकस क्या था यहाँ पर, वेस्टर्न एजुकेशन एंड द लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश। क्या फोकस था, वेस्टर्न एजुकेशन में फोकस था एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश में फोकस था। प्रोग्रेस ऑफ मुस्लिम के प्रोग्रेस में फोकस था। ओके, अलीगढ़ मूवमेंट में शाहिद अहमद खान वर्कड विथ ईस्ट इंडियन कंपनी। शाहिद अहमद खान वर्क किया था ईस्ट इंडियन, अलीगढ़ मूवमेंट जो शाहिद अहमद खान वर्कड विथ द ईस्ट इंडियन कंपनी, रोट एन एसे आशफ ई भागवती ई हिंद। ओके, आशफ ई भागवती ई हिंद। ओके, that is the cause of the revolt of 1857. Wrote an essay. Ashbab I Bhagwat e Hind. Okay, Ashbab I Bhagwat e Hind. That is the cause of the revolt of 1857. Scientific Society of Aligarh. That is the Translation Society, established 1867. Okay, Scientific Society of Aligarh, that is the Translation Society, established in 1867. Okay, 1870 में he started the newspaper Tahzib ul Akhlaq. 1875 में established मोहम्मद एंग्लो Oriental Congress. Three Englishmen associated with it, and namely the Theodore Beck and the Archbold and the Madison. Archbold and the Madison. Done. तो 1975 में एस्टेब्लिश हो रही है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एंड थ्री इंग्लिशमैन एसोसिएटेड विथ इट। यहाँ पे थ्री इंग्लिशमैन था, इसका नेम क्या था, थियोडोर बेक एंड द आर्चबोल्ट एंड द मेडिसन। क्या फोकस था प्रोमोट द वेस्टर्न एजुकेशन, प्रमोट करना वेस्टर्न एजुकेशन, लॉयल्टी टू द ब्रिटिश के पास लॉयल्टी। लेटर अलीगढ़ बिकम द सेंटर ऑफ द कम्युनलिज्म विथ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द INC इंटरनेशनल कांग्रेस इन 1885 में। It acquires a new character to encounter its British government started policy of divide and rule. It acquired new character to counter its British government started policy of divide and rule. 1888 में United Patriotic Association formed with the help of Raja Shiv Prasad of Banaras. 1896 में मोहम्मद बेक paper presented, and this paper demanded the reservation of Muslims in legislature and the municipalities, and this marked the beginning of Muslim separatist movement. तो क्या हो रहा है, अलीगढ़ मूवमेंट में
शाहिद अहमद खान की बात यहाँ पर बोल रहे हैं। अलीगढ़ मूवमेंट में शाहिद अहमद खान की बात यहाँ पर बोल रहे हैं। वर्क विथ ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके, वर्क विथ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की 1857 की रिवोल्ट की कॉज यहाँ पर बोला था। एंड साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़, दैट इज द ट्रांसलेशन सोसाइटी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन 1867। 1867 में एक ट्रांसलेशन सोसाइटी जहाँ पर साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़, एक साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़, दैट इज द ट्रांसलेशन सोसाइटी। तो साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ क्या था? ट्रांसलेशन सोसाइटी था, जो एस्टेब्लिश हो रहा था 1867 में। एंड 1870 ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर ऑफ ताहो-जी-उल-अकलक, ओके। इन 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। Mohammedan Anglo-Oriental College, and 3 Englishmen associated with it, namely the Theodore Beke and Archibald and the Morrison। ये क्या फोकस करता? फोकस था प्रमोट द वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना, इसका मेन फोकस था, ओके। लॉयल्टी टू द ब्रिटिश के साथ में बहुत लॉयल था। लेटर अलीगढ़ बिकम द सेंटर ऑफ द कम्युनिज्म, ओके। इसके बाद अलीगढ़ कम्युनिज्म का सेंटर हो गया। विथ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1885 में, इट एक्वायर्ड ए न्यू कैरेक्टर एक्वायर किया यहाँ पर टू काउंटर इट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट को काउंटर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। क्या? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्टार्ट कर दिए थे, ओके, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्टार्ट कर दिए थे। इन 1888 द यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन फॉर्म विद द हेल्प ऑफ द राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस, ओके। राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस के बारे में यहाँ पर बोल रही है। विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द INC ऑफ द 1885 इट एक्वायर्ड ए न्यू कैरेक्टर टू काउंटर इट ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड पॉलिसी डिवाइड एंड रूल। क्या पॉलिसी स्टार्ट किया दिया था? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्टार्ट किया था। डन। इन 1888 द यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस, ओके। यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द राजा शिव प्रसाद ऑफ बनारस की राजा शिव प्रसाद की हेल्प में यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन फॉर्म्ड हुआ है। 1896 में मोहम्मद बेग पेपर presented with this paper demanded the reservation of Muslim in legislature and the municipalities. Muhammad Beg paper presented and this paper demanded the reservation of Muslim in legislatures and municipalities. Okay, reservation of Muslim in legislature and municipalities, and this marked the beginning of Muslim separatist movement. Beginning of the Muslim separatist movement. Done. Beginning of Muslim separatist movement. This marked the beginning of Muslim separatist movement. Okay. British support for communal movement. कम्युनल मूवमेंट के लिए ब्रिटिश की सपोर्ट की बात यहाँ पर बोल रहे हैं। Some Britishers too had sympathy towards the Muslims. Some Britishers too had sympathy towards the Muslims. मुस्लिम के लिए सिंपैथी था, ओके। Like in 1871, William Hunter wrote a book, Indian Mussalman, okay. William Hunter wrote a book, The Indian Mussalman. In this book, he highlighted the decline of the Muslim participation in the government jobs. Okay, he highlighted the decline of Muslim participation in the government jobs. So, in 1871 में William Hunter wrote a book. Indian Mussalman. In this book,
He highlighted the decline of Muslim participation in the government jobs. He highlighted the Muslim participation in the government jobs. Government jobs में Muslim participation की decline के बारे में बोला है. Okay. In 1882 में Hunter Commissions recommended special measures to promote English education among the Muslims. Hunter Commissions in 1882 में Hunter Commission recommended special measures to promote the English education among the Muslims. To promote the English education among the Muslims. Okay, Hunter Commission ने recommended किया है special measures to promote the English education among the Muslims. The British strengthened communal forces by partition of Bengal. British strengthened किया है communal forces by partition of Bengal. By the partition of Bengal. Strengthened the communal forces by partition of Bengal. बेंगल को पार्टीशन करके कम्युनल फोर्सेस को और भी स्ट्रेंथन किया है. इन द 1906 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग in the 1906 establishment of the Muslim League at the Dhaka under the presidency of Aga Khan with the blessing of Viceroys. Okay, founder of the Muslim League Selimullah Nawab of Dhaka and Bikar ul Muluk and the Muhsin ul Uluk. Okay, उसके बारे में बोला है. And support given by the big jomindars and the bureaucrats. Okay, support given by the big jomindars and the bureaucrats. Act of the 1909 provided separate electorate for Muslims. Act of the 1909 provided the separate electorate of Muslims. Done. तो केवल ब्रिटिश सपोर्ट टू द कम्युनल मूवमेंट के लिए ब्रिटिश की सपोर्ट था बहुत. कैसे? some Britishers too had sympathy towards the Muslims. Some Britishers had sympathies towards the Muslims. Like in 1871, the William Hunters wrote a book, Indian Musalman. In this book, he highlighted the decline of the Muslim participation in the government jobs. He highlighted the decline of the Indian Muslims in the participation in the government jobs. In 1882 में हंटर कमीशन ने रिकमेंड किया है स्पेशल मेजर्स टू प्रमोट द इंग्लिश एजुकेशन अमंग द मुस्लिम्स. हंटर कमीशन ने रिकमेंड किया है स्पेशल मेजर्स टू प्रमोट द इंग्लिश एजुकेशन अमंग द मुस्लिम्स. डन. द ब्रिटिश स्ट्रेंथेंड कम्युनल फोर्सेस को स्ट्रेंथन किया बाय पार्टीशन ऑफ द बंगाल को पार्टीशन करके ब्रिटिश स्ट्रेंथन किया कम्युनल फोर्सेस को. Okay. The British strengthened communal forces by partition of Bengal. In 1907, establishment of Muslim League. Establishment of Muslim League at the Dhaka under the presidency of Aga Khan with the blessing of Viceroy. In 1906, the establishment of Muslim League के establishment होता है at the Dhaka में under the presidency of the Aga Khan with the blessing of Viceroys. Act of 1909 provided separate electorate for Muslims. Founder of the Muslim League Salimullah Nawab of Dhaka. Founder of Muslim League Salimullah Nawab of Dhaka and support given by big zamindars and the bureaucrats. Okay. एक्ट ऑफ द 1909 प्रोवाइड किया था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम के लिए. और 1906 में एस्टेब्लिशमेंट होता मुस्लिम लीग ढाका में मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश हो गया था अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ आगा खान एंड द प्लेसिंग ऑफ द वाइसरॉयज. फाउंडर ऑफ द मुस्लिम लीग सलीमुल्लाह नवाब ऑफ ढाका, बिकार उल मुल्लुक एंड मोहसिन उल मुल्लुक सपोर्ट गिव बाय द बिग जमींदार्स एंड ब्यूरोक्रेट्स. एनालिसिस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट Nationalist communalism. Analysis of the nationalist communalism. यहाँ पर क्या होता? This phase revolves around the idea of reforms in the community and want some of concessions like the entry of the Muslims in government jobs. इस phase में क्या होता? This phase revolves around the idea of demand. There is no demand for separate state. यहाँ पर separate state की कोई भी डिमांड नहीं था. There was decline of this trend की decline with the rise of young nationalist Muslim leaderships.
1911 से 12 के ऑनवर्ड में जब यंग नेशनलिस्ट मुस्लिम्स nationalist movement like the Ahrar movement played an important role. Okay, Ahrar movement जो था वो Ahrar movement was established in 1910 में Ahrar movement क्या हुआ established हुआ था. Okay, Ahrar movement क्या established हुआ under the leadership of the मौलाना मोहम्मद अली and हाकिम अजमल खान. इसकी लीडरशिप में मोहम्मद Ahrar movement was established in 1910 and under the leadership of the Maulana Muhammad Ali and Hakim Azmal Khan. Okay. Other founders were Hassan Imam and Maulana Jafar Ali Khan and the Mahazar ul Haq. The movement was started as an anti-Aligarh movement, and Ahrar movement founders objected to the Aligarh movement loyalty police. Aligarh movements की loyalty towards the police. Okay. Aligarh movement की loyalty towards the police. तो ये पर क्या हो रहा है? Ahrar movement में Ahrar movement was established हुआ था कब 1910 में. ओके, इसकी लीडरशिप में मौलाना मोहम्मद अली की लीडरशिप में एंड हाकिम अजमल खान की लीडरशिप में मौलाना मोहम्मद अली एंड द हाकिम अजमल खान की लीडरशिप में. अदर फाउंडर्स कौन कौन से था? और हसन इमाम. अदर्स फाउंडर कौन था? हसन इमाम था, मौलाना जाफर अली खान एंड द महाजर उल हक. अदर फाउंडर्स कौन था? और हसन इमाम and Maulana Jafar Ali Khan and the Mazahar ul Haq. The movement was started as the anti-Aligarh movement. Okay, the movement was started as the anti-Aligarh movement. Done. And Ahrar movement founded the object to the Aligarh movement loyalty to the policies. डन. नेक्स्ट फेज टू में लिबरल और मॉडरेट कम्युनलिज्म. फेज 2 में क्या बोला है? लिबरल एंड द मॉडरेट कम्युनलिज्म. लिबरल एंड द मॉडरेट कम्युनलिज्म की बात बोल रहे हैं यहाँ पर 1910 से 1937 के बीच में. ओके, अबाउट लिबरल एंड द मॉडरेट कम्युनलिज्म. अबाउट द लिबरल एंड द मॉडरेट स्टूड फॉर कॉमन एंड कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी. ओके, स्टूड for common and collective interest of the community. क्या किया था? stood for common and collective interest of community. works within the framework of the nationalism. work कर रहा था within the framework of nationalism. okay, work कर रहा था within the framework of nationalism के framework में. ideology क्या था? exclusively communal interest, but it works under the single nations. Okay, nation stood for common and collective interest of the community. community में common and collective interest के बारे में यहाँ पर बोल रहे हैं. community में common and collective interest के बारे में यहाँ पर बोल रहे हैं. common and collective interest of community. done. लिबरल मॉडरेट कम्युनलिज्म. कॉमन एंड कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी की कॉमन एंड कलेक्टिव इंटरेस्ट के बारे में बोल रहे हैं. वर्क्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द नेशनलिज्म. वर्क कर रहा था कहाँ पर? विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ नेशनलिज्म. नेशनलिज्म के फ्रेमवर्क में वर्क कर रहा था. आइडियोलॉजी क्या था? एक्सक्लूसिवली कम्युनल इंटरेस्ट. एक्सक्लूसिवली कम्युनल इंटरेस्ट, but it work under the single nation. okay, आइडियोलॉजी क्या था? exclusively communal interest था, but it works under the single nations. okay, cracks. The interest of one community is in danger because of the others. Interest of the one community is in danger because of the others. Done.
Cracks क्या था? Interest of one community is in danger because of the other. So to protect the interest of the particular community, reservations in government jobs. To protect the interest of the particular community, reservation in government jobs, separate electorate are necessary. Represented by the Hindus. Okay. Represented by the Hindu Mahasabha and the Muslim League. Hindu leaders Lala Rajpat Rai and Madan Mohan Malviya and the M.R. Jaishankars. Okay, M.R. the Jaishankars. No, Jayakars. Muslim leaders like the M.D. Iqbal Ali brothers. Okay, M.D. Iqbal Ali brothers and M.A. Jinnah. Timeline for M.A. Jinnah. Analysis of the liberal moderate communalism. क्या था? Till 1937 क्या मैं बोल रहा हूँ? Till 1937 Muslim separatism was associated with the exclusive interest of community. Okay. Muslim separatism was associated with the exclusive interest of community and protection of those interests within the broader framework of the nations. It stood for common and collective interest. Lucknow Pact of 1916 is a representative example of unity between the Muslim League and the Indian National Congress. Lucknow Pact. Timeline or liberal or nationalist communism. Establishment of Punjab Hindu Mahasabha in 1909 में established हुआ था पंजाब हिंदू महासभा by the UN Mukherjee and the Lal Chand. Establishment हुआ था पंजाब हिंदू महासभा. Established हुआ था पंजाब हिंदू महासभा in 1909 by UN Mukherjee and the Lal Chand. Okay, by UN Mukherjee and the Lal Chand. Done. Establishment of Hindu Mahasabha in 1915 at the Haridwar by the Madan Mohan Malviya. Okay, by the Madan Mohan Malviya. क्या बोल रहा है? Establishment of the Hindu Mahasabha in 1915 at the Haridwar by Madan Mohan Malviya. Beginning of the Shuddhi by Hindu Mahasabha and Tabligh movement. Okay. 1919 से 20 के बीच में beginning of the संगठन of the Tanzim movement. 1923 में B.D. Bhaskar presented the idea of two nations in his book Essential of Hindutva. 1925 में establishment हुआ था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS. 1925 में RSS. मार्च 1929 में जिन्ना 14 पॉइंट. ओके. 1930 में M.D. इकबाल इन Allahabad session of League presented the idea of the autonomous area for the Muslim in NW part of India. 1903 में Rahmat Ali during the RTC3 coined the word Pakistan in his pamphlet Now or Never, and the demand is separate state. He started the Pakistan National Movement. About the liberal and moderate communism में क्या था? Stood for the common and collective interest of the community. Work within the framework of the nationalism. Ideology or exclusive communal interest था, but it works under the single nations. Okay. Ideology क्या था? Exclusive communal interest था, about it work under the single nations. Crux. The interest of one community is in danger because of others. Okay. So to protect the interest of the particular community, reservation in government jobs and the separate electorate are necessary. Done. Represented by the Hindu Mahasabha and the Muslim League. Hindu leaders में कौन था? लाला लाजपत राय and the Madan Mohan Malviya. And Muslim leaders में कौन था? M.D.
M.D. Iqbal and the Ali brothers and M.A. Jinnah. What is the timeline of liberal and the liberal or nationalist communalism? Establishment हुआ था of Punjab Hindu Mahasabha in 1909 में by the U.N. Mukherjee and the Lala Chand. Okay, and Lala Chand. क्या बोला? Establishment हुआ था पंजाब हिंदू महासभा 1909 में by U.N. Mukherjee and Lala Chand. Establishment हुआ था हिंदू महासभा in the 1950 में at the हरिद्वार by मदन मोहन मालविया. At the हरिद्वार मदन मोहन मालविया. हिंदू महासभा 1915 में at the हरिद्वार by मदन मोहन मालविया. Beginning of the शुद्धि by Hindus महासभा. Beginning हुआ था शुद्धि by Hindus महासभा and Tabligh movement. Okay. 1919 से 20 के बीच में बिगिनिंग हुआ था संगठन ऑफ द तांजिम मूवमेंट. 1923 में बीडी सावरकर प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ द टू नेशन इन हिज बुक एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व. 1925 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ. ओके, राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ एस्टेब्लिश हुआ था 1925 में. एंड मार्च 1929 में जिन्ना की 14 पॉइंट एस्टेब्लिश हुआ था. 1930 में M.D. इकबाल इन अलाहाबाद सेशन लीग प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ द ऑटोनोमस एरिया फॉर मुस्लिम NW पार्ट ऑफ इंडिया. M.D. इकबाल अलाहाबाद सेशंस ऑफ लीग presented the idea of the autonomous area for Muslim in Northern National Movement. Okay, Lucknow Pact. Lucknow Pact between the Indian National Congress and the Muslim League. Indian National Congress and Muslim League के बीच में Lucknow Pact हुआ था. It is a scheme for political reform. Political reform के scheme था in India में. Okay, it is a scheme for political reform in India, and Congress first time officially accept the separate electorate for Muslim. हाँ, फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट किया था. एनिमेशन तिलक एंड द M.A. जिन्ना प्लेड ए इम्पोर्टेंट रोल. ओके, एनिमेशन तिलक एंड M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल. अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम्स इन मुस्लिम मेजोरिटी एरिया एंड अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम इन मुस्लिम मेजोरिटी एरिया ओवर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द हिंदू मेजोरिटी एरिया. ओवर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम्स इन हिंदू मेजोरिटी एरिया. Imperial legislative in the Imperial Legislative Council 4/5 members should be elected one. Out of the 4/5 elected members, 1/3 should be elected from the separate electorate. 1/3 should be elected from the separate electorate of Muslim. Same provisions of elected members in provincial legislature. Same provisions of elected members in the provincial legislature. डिमांड किया था, इसका डिमांड किया था एबोलिशन ऑफ द इंडियन काउंसिल. इंडियन काउंसिल को एबोलिश करो. एनलार्जमेंट करो वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल को. वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एनलार्ज करो. एंड हाफ इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स होना चाहिए. Full power should be given to the Imperial Legislative Council except the military and the foreign affairs. क्या बोल रहा हूँ मैं? Full power should be given to the Imperial Legislative Council except the military and the foreign affairs. Full power should be given to the Legislative Council and the government of India should not interfere the provincial government affairs. Executive officers should not हैव जुडिशियल पावर. क्या बोल रहा है डिमांड में? क्या बोल रहा है? एबोलिशन ऑफ द इंडियन काउंसिल को एबोलिशन करो. एनलार्जमेंट ऑफ द वाइसरॉयज को एनलार्जमेंट करो. एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एनलार्जमेंट करो विथ हाफ इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स को. फुल पावर शुड बी गिवन टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को फुल पावर देना चाहिए एक्सेप्ट द मिलिट्री एंड फॉरेन अफेयर्स. Full power should be given to the Legislative Council. The government of India should not interfere in the provincial government affairs. Executive officers should not have judicial powers. Phase 3. Extreme communalism. Outcome of the general elections. 1937 की general election के outcome से phase 3 स्टार्ट हुआ है.
Hindu Mahasabha and Muslim League contest election of the nationalistic program. Both Hindu Mahasabha and the Muslim League contest election the nationalistic program में. They incorporated most of the nationalistic programs and the many of the Congress policies. They incorporated corporation नहीं किया, help नहीं किया most of the nationalist program and the many of the Congress policies. Okay, Congress policy and nationalist program में help नहीं किया. The Muslim League and Hindu Mahasabha performed very poorly. Muslim League won just 109 out of the 493 seats reserved for Muslims. मुस्लिम के जो 492 सीट्स जो रिजर्व था उस रिजर्व सीट में जस्ट 109 ही मुस्लिम लीग ऑन किया था. मुस्लिम लीग secured only 4% of the total Muslim vote. Okay, Muslim League secured only 4% of the total Muslim vote. टोटल मुस्लिम वोट की 4% ही सिक्योर कर पाया था. टोटल मुस्लिम वोट की ओनली 4% ही मुस्लिम लीग ने सिक्योर कर पाया था. अदर मुस्लिम पार्टीज परफॉर्म्ड वेल लाइक यूनियनिस्ट पार्टी इन पंजाब एंड प्रजा खुशकर पार्टी इन बंगाल. दे परफॉर्म्ड वेल because they received support from landlords and the bureaucrats. Okay, others Muslim party performed well like the Unionist party in Punjab में Unionist party and the Praja Khushkar party in the Bengal, and they performed well because they received support from the landlords and the bureaucrats. Hindu Mahasabha also did not perform well. Communal propaganda. New political stand. Both Hindu Mahasabha and the Muslim League adopted new stand in politics. Okay, समझो. Both Hindu Mahasabha and the Muslim League adopted new stand in politics. Politics में new stand ले रहे हैं. New line of the politics की new line ले रहे हैं. Adopted by the Muslim League. Islam is in danger, and Muslim is not representing minority but as nations. The Hindu communists respond with the same jail. Hindus are in danger and presented the idea of the Hindu Rashtra. Communal propaganda. Muslim League Congress is Hindu party but served the interest of the Hindus after the independence. Okay, Congress Muslim League क्या बोल रहा था? Congress is a Hindu party served the interest of Hindus after the independence. And Muslim leaders in Congress are show boys. Okay, Muslim leaders in Congress are show boy. जो मुस्लिम लीडर था कांग्रेस में उसको शो बॉय बोलते थे. और मुस्लिम लीग क्या करते? कांग्रेस इन हिंदू पार्टी में जो कांग्रेस था सर्व द इंटरेस्ट ऑफ हिंदूज. हिंदू की इंटरेस्ट सर्व कर रहा था आफ्टर द इंडिपेंडेंस. हिंदू महासभा कांग्रेस फॉलोड द पॉलिसी ऑफ द appeasement and they are anti-Hindu. हिंदू महासभा क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस फॉलोज द पॉलिसी ऑफ द appeasement and they are anti-Hindu. क्या बोल रहा था? ये anti-Hindu है. And cannot protect the interest of the Hindus. Cannot protect the interest of the Hindus after the independence. Okay. Cannot protect the interest of Hindu after the independence. Then 1937 में हिंदू महासभा सेशन हुआ एट द अहमदाबाद में 1937 में हिंदू महासभा सेशन हुआ. एंड बी.डी. सावरकर वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द हिंदू महासभा. बी.डी. सावरकर वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द हिंदू महासभा. पास्ट द रिसोल्यूशन ऑफ 2 नेशन. दोनों नेशन की रिसोल्यूशन पास किया था. जिन्ना क्या बोला था? सिकंदर हयात खान पैक्ट. मुस्लिम लीग become a partner in the Punjab Legislative Assembly. Muslim League become the partner of the Punjab Legislative Assembly. पीरपुर रिपोर्ट में प्रोपागंडा अगेंस्ट द कांग्रेस मिनिस्ट्री अगेंस्ट में प्रोपागंडा दिया गया. सारिप रिपोर्ट में क्या बोला? प्रोपागंडा अगेंस्ट द कांग्रेस मिनिस्ट्री. 22 दिसंबर 1939 डे ऑफ द डिलीवरेंस. 23 मार्च 1940 में एट द लाहौर सेशन ऑफ द लीग adopted the official stand of the separate state. It is popularly known as the Pakistan resolutions. Okay, in 23 March 1940 में
at the Lahore session of the League adopted the official stand of the separate state, it popularly known as the Pakistan Resolutions. Pakistan resolution was drafted by Muhammad Jafruh Khan and resolution presented by the Fazl-ul Haq. In 1941, at the Aligarh, Jinnah addresses the masses. If you want to save Islam from complete annihilation from India, then only solution is Pakistan. Only solution is Pakistan. Karachi session of Muslim League, they passed the resolution of the divide and quiet. Various plan and the deadlock between the Congress and the Muslim League. Rajaji formulations. See Rajagopalacharya formulations. Rajaji's key formulation or see Rajagopalacharya key formulation. Meanwhile, efforts were on to solve on the ongoing constitutional crisis between the Congress and the League. On the basis of Rajaji's formula, Gandhiji Jinnah talk, known as the Bombay talk happened. Muslim League to endorse Congress demand for independence. Endorse कर रहा था Congress demand for independence. League to cooperate with Congress in forming an interim government at the center. League to cooperate with the Congress के साथ cooperate कर रहा था in the forming an interim government at the center. After the end of the war, establishment of a commission to democratic continuous district in the northwest and the northeast India. A referendum in democratic area to decide whether or not to form a separate sovereign state. Referendum in democratic area to decide whether or not to form a separate sovereign state. In case of acceptance of the partition, agreement to be made jointly for safeguarding the defense, commerce and the communications. Jinnah rejected the idea of the continuous district and also wanted the Congress to accept and two nations theory. He wanted only the Muslim of northwest and northeast to be vote the peace side. Okay, final talk failed. Desai liquid pact January. Effort continued at the end of the deadlock. Talk between the Bhulla Bhai Desai and the Liquid Ali Khan. Formation of the interim government at the center through the following provisions. Jinnah rejected the offers. Equal number of the members nominated by the Congress and the League in the central legislature. 20% reserved seat for minorities in the interim government. Waiver plan. All portfolios under the Indian except war portfolio. Okay, all portfolios under the Indians except war portfolio. Jinnah wanted the nominations of all members of Muslim community by Muslim League only. The Viceroys and the Congress reject the Jinnah's demand. Viceroys were thinking about the other Muslim parties like Unionist Party and the Prajaji Krishak Party. Congress was a secular party and the Congress has to think about her Muslim members. Finally, failures of the Waiver plan and presented by the Viceroy's Waiver in the June 1945 and during the Shimla conference. Congress was represented by the Maulana Azad and the League was represented by the M.A. Jinnah. Plan क्या था? Reorganizations of the Viceroy's executive plan and with an equal number of the members from Hindu and Muslim community. All members would be Indians and except Viceroys and Commander-in-Chiefs. Let's complete. One minute. थोड़ी सी ब्रेक, तुम थोड़ी सी रिवाइज कर लो. ओके, 1 minute ब्रेक.